Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I'm Hema Choudhary and I welcome you all to the current affairs series by our channel Pratham Test Prep. Sorry for the delay for the session, right? So there was some technical issue from my side. So I hope you all are doing well. Hi, beta. Hi, Akansha. Happy Valentine's, bache. Chaliye. So if we talk about today's session, we will be covering the current affairs of last 3 days. That is from 11th February to 13th February 2022. Akansha, I would like to request you to tell other people also to join if you know that these are the people's regular basis pay, join. Just drop them a message that this session has been started now. There was some network issue. So I don't know why. I think there is some network issue, from the Vodafone side. So I think वहीं से network का पीछे से काफी issue आ रहा था, right? In my Wi-Fi and my phone all in both. So let's just quickly start today's session. So in today's sessions, we will be covering the important current affairs of these 3 days, which is 11, 12th and 13th February 2022. जल्दी से देखते हैं हमारी पहली न्यूज क्या है, बट उससे पहले if you guys are preparing for the CLAT 2022 or 2023 or any other law entrance exam, you can join our Telegram channel with the name CLAT@Pratham. And if you guys are preparing for IPM, DU-JAT or any other management exam, right, you can join our Telegram channel with the name IPM-Pratham Test Prep. Hi everyone. Hi Sarthak. Hi Ria. Beta will see because already हमारा इतना time निकल गया है because of that particular issue, technical issue from my side, right? Sarthak Vijay, CUCET will soon have a YouTube session in which you will be able to get all the answers for your questions, right? Pratham is planning to, do a section on CUCET very soon. चलिए आगे बढ़ते हैं. So now if we talk about the first important news for today's session, right? The first news is about an important day with the name World Radio Day. World Radio Day is observed every year on which date? 13th February, right? So 13th February को क्या observe किया जाता है? You're saying slide is not visible? Is it that so? Just a second. Is it visible now? Is it visible now, Bharti Singh? So World Radio Day 13th February observe किया जाता है. So we can say that World Radio Day is observed on which date? 13th February, right? For we can say that to underline the importance of radio, right? In today's world, what exactly is the importance of the radio? And इसी के साथ you need to know about the theme for this year. So World Radio Day 2022 की theme क्या है? Radio and trust. Very simple but very important. Radio and trust, right? So इसको आप ये समझ सकते हो that why this year's theme was important, क्योंकि इस साल की जो theme थी वर्ल्ड रेडियो डे की, which is radio and trust, इसको 3 सब themes में डिवाइड किया गया था. आप ये पॉइंट जरूर लिखेंगे that the theme of the day in 2022 for World Radio Day, it has been divided into 3 main sub themes, जिसमें पहली क्या है? Trust in radio journalism. Second, trust and accessibility. And third, trust and viability of radio stations, which is in total you can say that radio and trust was the theme. लेकिन क्या सब themes थी आपको याद होना चाहिए? Trust in radio journalism, trust and accessibility, and trust and viability of radio stations, right? अगर हम बात करते हैं कि किसने ये अनाउंस किया, तो it was first time, the World Radio Day was first time announced by UNESCO, right? And it first proclaimed in the year 2001. Now here my additional question to everyone is, where is the headquarter of UNESCO? Where is the headquarter of UNESCO? That is my additional question for all of you. बताइए. Yes to radio and to trust. World Radio Day 13th February 2022 and आप कह सकते हो observed by UNESCO. Very good Akansha. क्या है बेटा आंसर? Paris, right? So headquarter of UNESCO is at Paris. So फिर से repeat कर लेते हैं important pointers. World Radio Day 13th February, right? And the theme for the year 2022 was radio and trust.
The theme for this year was divided into three main sub themes. क्या थी? Trust in radio journalism, trust in accessibility, and trust in viability of radio station. It is observed by which organization? UNESCO. First time observed in which year? 2011. And where is the headquarter of UNESCO? Paris. So these are the important pointers related to this particular news. चलिए आगे बढ़ते हैं. I hope सबका done है. World Radio Day, 13th February. Theme was radio and trust, divided into three sub themes: trust in radio journalism, trust in accessibility, trust and viability of radio stations, observed by UNESCO. First time observed in the year 2011, and headquarter of UNESCO Paris. Right, मैं repeat कर चुकी हूँ एक एक point को at least 4 times, and now I think it's time to move to the next slide, right? And the next news that we have here is Surat to get India's first bullet train station by December 2024. So Mumbai Ahmedabad bullet train project जो चल रहा है, right? It will be completed and it will be the India's first bullet train route. So पहला bullet train route of India कौन सा होगा? Mumbai to Ahmedabad, right? And दूसरा कौन सी सिटी में फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा ये भी पता होना चाहिए. तो आंसर सूरत. इसमें दो मेन पॉइंटर्स है जिसपे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत. फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट मुंबई टू अहमदाबाद कब स्टार्ट होगा? सूरत स्टेशन दिसंबर 2024. राइट. कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे काम? National High Speed Rail Corporation Limited, and this project is scheduled to be completed by December 2024. And when we talk about the cost of this project, it is estimated to be more than 1 lakh crore. Right? Obvious है, because हम bullet train की यहाँ पे बात करें तो लागत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी. एंड इसमें से भी जो 88,000 करोड़ है इसको किसने फंड किया है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिसके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. राइट. इसी के साथ इफ वी टॉक अबाउट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, जिनका नाम है दर्शना जरदोश, ये याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज है. राइट. इन्होंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो था वो शेयर किया था किसका? सूरत स्टेशन का. एंड आपको पता होना चाहिए हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. द नेम ऑफ द पर्सन इज सतीश चंद्र अग्निहोत्री. सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है इस पूरी न्यूज में. फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा होगा? सूरत. सेकेंड, इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट कौन सा होगा? मुंबई टू अहमदाबाद. कब कंप्लीट होने का है ये प्रोजेक्ट? इट विल बी कंप्लीटेड और इट इज scheduled to be completed by December 2024. Who is working on this project or who is constructing this project mainly? National High Speed Rail Corporation Limited. एंड कितना खर्चा है, कितनी कॉस्ट है इसकी? 1 लाख करोड़. किसके साथ मिलके किया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी. राइट. एंड हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHSRCL, which is National High Speed Rail Corporation Limited? Satish Chandra Agnihotri. 7 points, but main 3 points. Surat, India's first bullet train station. Mumbai to Ahmedabad, India's first bullet train route, to be completed by December 2024. I hope all the points are clear now. Second news, all the points are clear. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से एंड देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? राइट. बहुत ज्यादा न्यूज है नहीं वैसे जिसको कि हम यहाँ पे कवर करेंगे आज. देयर विल बी ओनली 5 to 6 न्यूज. ठीक है. यस बेटा. राइट. सो बच्चे दोबारा से ओके, वन मोर न्यूज. वी आर planning to restart the business awareness sessions, right? And maybe from next week on Saturday we will be having our business awareness section every week now, right? So these type of business news will cover in that particular session. ठीक है बेटा. चलिए. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? स्कीम लॉन्च की है कौन सी? स्माइल. कौन सी स्कीम? स्माइल. किसके लिए? फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. किसके लिए किया है? फॉर ट्रांसजेंडर community. So government of India has launched Smiles scheme for transgender community. So Union Minister for Social Justice and Empowerment
You need to remember these ministers name also, and the name is Dr. Virendra Kumar. इन्होंने क्या लॉन्च की है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद द नेम स्माइल, एंड स्माइल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. इट स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर support, M stands for marginalized, I stands for individual, L stands for livelihood, and E stands for enterprise. So SMILE stands for support for marginalized individuals, for livelihood and enterprise, right? So ये आपको पता होना चाहिए. And the aim of this scheme is to provide welfare measurement to the transgender community and people engaged in the act of begging. उन लोगों को क्या प्रोवाइड करना, राइट? मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो हैं उनको लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज प्रोवाइड करना, राइट? लीगल प्रोटेक्शन एंड बाकी चीजें प्रोवाइड करना. जो भी टारगेट ग्रुप है उसको एटलीस्ट उनके जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट, उसको फुलफिल करना, उसके लिए पूरा सपोर्ट करना, उसके लिए स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है. सो किसने लॉन्च की? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. कौन है यूनियन मिनिस्टर? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. क्या लॉन्च की? कौन सी स्कीम लॉन्च की? स्माइल. किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगिंग कम्युनिटी के लिए. What is the full form of SMILE in this scheme? So SMILE stands for support for marginalized individual, for livelihood and enterprise, right? ये pointers आपको याद होने चाहिए. ठीक है जी. सो ये दो लोगों के लिए है, मेनली दो कम्युनिटीज के लिए है. ट्रांस वेलफेयर फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस, एंड आप कह सकते हो एंड वेलफेयर फॉर द पर्संस एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग. ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ तक डन है. नेम ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, नेम ऑफ द मिनिस्टर एंड द एम ऑफ द स्कीम. 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों आपकी टिप्स पे होने चाहिए, राइट? सो दैट वाज द थर्ड न्यूज. देखते हैं अपनी अगली न्यूज क्या है. एंड द नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव फॉर टुडेज सेशन इज सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर. इसने अपना खुद का रेडियो चैनल स्टार्ट किया है, राइट? सो सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर जो है, it started its own radio channel with the name Jail Vani FM 18.77. ये आपको याद होना चाहिए दैट मध्य प्रदेश की जो सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर है उसने अपना खुद का रेडियो चैनल जो है वो लॉन्च किया है विद द नेम जेल वानी FM 18.77, राइट? एंड इसमें आप ये कह सकते हो, राइट? सो इन इसका जो मेन एम है, इट इज टू कैच some kind of, or to have some kind of entertainment within the prison, right? So आप ये कह सकते हो that this radio channel will provide the jail inmates the information on health and social issues. ठीक है? Radio stations will act as medium for prisoners to tell their own story and also to share their experiences, because ये within the jail ही इसको पूरा आप कह सकते हो हैंडल किया जाएगा, राइट? एंड जेल सुपरिटेंडेंट जो है बच्चे अलका सोनकर, उन्होंने इन्फॉर्म किया है जेल inmates को about what is happening across the world and indirectly they can connect with the outside world, right? So आपको इस पूरे न्यूज में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? First, which jail has started its own radio channel in the month of February? Answer, Central Jail of Indore. या फिर which state, a jail in which of the following state has started? तो स्टेट पे क्वेश्चन आएगा तो मध्य प्रदेश, जेल पे क्वेश्चन आएगा तो सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर, या फिर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर स्टार्टेड इट्स ओन रेडियो चैनल. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? याद होना चाहिए आपको, जेल वानी FM 18.77. ये 3 पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली फॉर दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट. क्लियर बेटा? All the points are clear? So Central Jail of Indore started its own radio channel, Jail Vani FM 18.77. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. And the next news that we have for today's session is N. Chandrasekharan, very important, Natarajan Chandrasekharan has been reappointed as the chairman of Tata Sons. Natarajan Chandrasekharan has been reappointed as the chairman of Tata Sons. Tata Sons Private Limited ने reappointment किया है N. Chandrasekharan या Natarajan Chandrasekharan का as the executive chairman of the company for the second 5-year terms. अभी कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट 5 ईयर टर्म्स के लिए फिर से इनको चेयरमैन बना दिया गया है. ठीक है?
तो इनका जो चेयरमैन की पोस्ट थी, जो टर्म था, it was to expire at the end of the February 2021 because he took the role of the chairman of Tata Sons in 2017 and क्योंकि इसकी जो चेयरमैनशिप होती है उसका टर्म इज अराउंड 5 years, सो अभी फिर से सेकेंड 5 year टर्म इनका स्टार्ट हो गया है, राइट। सो फिर से अगले 5 साल के लिए हु इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, नटराजन चंद्रशेखरन, and where is the headquarter of Tata Sons Private Limited? It's in Mumbai, right? Answer is it's in Mumbai, right? I'm repeating, who has been reappointed as the executive chairman of Tata Sons? Answer is N Chandrasekharan or Natarajan Chandrasekharan. पहले कब अपॉइंट हुए थे? 2017 में फॉर 5 years टर्म। अब फिर से कितने सालों के लिए अपॉइंट किया गया है? फॉर 5 years टर्म। Where is the headquarter of Tata Sons? Answer is Mumbai. So all these points are important in this news. The name of the person and the term is important, and पहले कब रोल संभाला था, that is also important. 2017 से हैं। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। क्या है? चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। कितने टाइम के लिए? फॉर नेक्स्ट 5 years, एंड मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। टाटा ने रिसेंटली कंप्लीटली एक्विजिशन किया है किसका? एयर इंडिया का, जिसका गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था इन प्रीवियस बजट, राइट, एंड उसको कंप्लीट कर दिया गया है। सो आपको ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए, ठीक है बच्चे। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. I think all the important pointers are clear in this particular slide. Yes, beta. Yes, yes, Akansha. So जब मैं business news start करूंगी, I cover that point again. ठीक है, Air India वाला point again. So I'll start with the business news from the month of January, जब भी मेरे business news वाले section start होंगे. Now next important news is about ranking. So India has been ranked at 46 in EIU Democracy Index. देखो, जब भी रैंकिंग की न्यूज आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ 3 पॉइंट्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए. फर्स्ट, टॉप रैंक कंट्री, सेकंड, इंडिया की रैंक, एंड थर्ड, किसने उस रैंकिंग को रिलीज किया. तो तीनों को एक एक देख करके देखते हैं. फर्स्ट तो ये है कि इंडिया की रैंक क्या है. सो इंडिया की रैंक इज 46. किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स में. किसने रिलीज किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU ने. किसने रिलीज किया? EIU ने. इंडिया की रैंक हमने अभी पढ़ी. इंडिया की रैंक क्या है? 46. तो इंडिया इज एट द 46th रैंक इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, राइट. एंड टॉप की अगर हम बात करें, सो टॉप पे कौन है? नॉर्वे. टॉप पे कौन है? नॉर्वे, देन न्यूजीलैंड, देन फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड. सो टॉप कौन सी है? नॉर्वे. सो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? आपको याद रखना है टॉप रैंक कंट्री, आंसर इज नॉर्वे. आपको याद रखना है इंडियाज रैंक, राइट. इंडियाज रैंक इज 46, एंड आपको याद करना है कि किसने रिलीज किया. तो आपको ये याद रखना है दैट इट इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है. ये 3 पॉइंट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि आपको फोकस करना है. आई होप सबको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे. कौन सा इंडेक्स है? डेमोक्रेसी इंडेक्स. टॉप पे कौन है? नॉर्वे. इंडिया की रैंक क्या है? 46. किसने रिलीज किया? EIU, which stands for Economist Intelligence Unit. Economist Intelligence Unit, ठीक है बेटा. क्लियर है पुत्र जी? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है द इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट. उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल है, एंड द फंक्शनिंग ऑफ द government according to the democracy, right, the political participation, the political culture, then the liberties that has been given to the citizens of all these countries, right. And also कि किस तरह की आपकी डेमोक्रेसी है. इज इट अ फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड regime और अथॉरिटेरियन. एंड इस पर्टिकुलर रैंकिंग ने इंडिया को डिक्लेयर किया है एज फ्लॉड डेमोक्रेसी. So India is at 46th ranking, and along with that India has been ranked as flawed democracy, or it has been put under the flawed democracy category. क्लियर है बेटा? रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स अगेन. कौन सी इंडेक्स है? कौन सी रैंकिंग है? डेमोक्रेसी इंडेक्स. इंडिया की रैंक क्या है? 46. टॉप रैंक कौन सा है? नॉर्वे. किसने रिलीज किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. एंड इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी. 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट. आई होप सबको एकदम क्लियर होगा एंड टिप्स पे होगा. डन बेटा? डन बेटा जी? देखो, लास्ट सेशन में हमारी इतनी ज्यादा न्यूज नहीं थी. आई थिंक लास्ट सेशन में हमारी 4
मुश्किल से 4 न्यूज थी, राइट, एंड उस पे इतना ज्यादा मेंटी क्विज बनता नहीं, तो विल डू वन थिंग, हम लास्ट सेशन एंड आज के सेशन की जो न्यूज है उनको मिला के एक अच्छा सा 10 क्वेश्चंस का मेंटी क्विज बनाएंगे, बिकॉज आज की न्यूज भी हो गई है खत्म, इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी वो हमारी हो चुकी है खत्म। आई होप जितनी भी न्यूज आज हमने कवर की है वो सब आपके टिप्स पे होगा, राइट। ऑलरेडी हमने काफी लेट स्टार्ट किया था आज का सेशन, एंड अगेन राइट, अपोलोजाइजिंग फॉर द सेम। हाँ जी बच्चे, यस गौरव, राइट। सो बच्चे आप रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को, तो बिल्कुल भी बेवफाई नहीं होगी गौरव जी, ठीक है। चलिए, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द रैपिड फायर जो हमने आज कंप्लीट किया है, राइट। उसका हम एक क्विक रैपिड फायर करेंगे, सो दैट हमारे सामने जितने भी पॉइंटर्स हमने किए हैं, राइट, वो आपके टिप्स पे हो, ठीक है। चलिए मुझे ये बताओ, इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ होगा, बताइए। Where will be the India's first bullet train station? बेटा ये सारी जो हमारी न्यूज है ना, इसको भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी। बिजनेस न्यूज सेक्शंस में दोबारा से लॉन्च करने वाले हैं बच्चे, प्रथम हम लोग दोबारा लॉन्च करेंगे, तो उसमें हम सब कवर कर लेंगे, बिकॉज आई कवर द बिजनेस न्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, द सीईओ फॉर एयर इंडिया, right, the death of the top business tycoons and everything. Surat, very good. And where, which will be the India's first bullet train route? हाँ जी, बुलेट ट्रेन रूट। एंड ये प्रोजेक्ट, तीसरा क्वेश्चन वो आंसर देने के बाद तीसरा आंसर देना कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। वेरी गुड, मुंबई टू अहमदाबाद, नॉट पुणे, मुंबई टू अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद तो पुणे लिख दिया था आपने गलती से, हाँ जी। एंड बच्चे क्या आंसर होगा? 2024 December. World Radio Day is observed on which date? World Radio Day is observed on which date? World Radio Day is observed on which date? 13 February. What was the theme for this year? What was the theme for this year? Theme for this year. Waiting for the answers. Radio and trust. Very good. Now tell me that we know that Government of India launched Smile scheme for transgender community and the begging community. What does M stands for in Smile? What does M stands for in Smile? Radio something. Okay, Siaji. It's a radio and trust. Yes, answer is marginalized. Very good. Tell me the name of the radio channel started by Central Jail of Indore. Who has been reappointed? Yes, correct. Who has been reappointed as the executive chairman of Tata Sons? Yes, great. Now, last question. What is the rank of India in the Economist Intelligence Unit's Democracy Index? Yes, 46. Very good, Varshish. Very good. चलिए, वेरी गुड बच्चे। चलिए बच्चा, आई थिंक आज के सेशन में हमने जितने भी न्यूज कवर किए वो सब आपके टिप्स पे है, राइट। चलो, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रिवाइजिंग।